Okay, so this is the fourth lecture for the economics part. So last class में where we have left, what is economics? I told you ये discipline कैसे emerge हुआ था, right? So I told you कि economics क्या था, कि usually infinity क्या थी, wants plus needs, right? And we have in earth limited या scarce resource. So इस चीज का, इन दोनों इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन which discipline will give? This is economics, right? ये discipline is economics. So right, यहां तक हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में. उसके बाद मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर क्वेश्चन था, if there is no scarce resource, will there will be economics subject, economics as a discipline, right? So जब आपने आंसर किया था नो, so yes, this is correct answer, but we will do some analysis also कि आपको ये बातें समझ में आए प्रॉपरली. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो कि आप जादू हो, कोई मिल गया मूवी की, कोई मिल गया मूवी की, जादू हो, तो आपके लिए एसेंशियल चीज क्या है, एसेंशियल रिसोर्स क्या होगा? टेल मी. यस, यस व्यूवर्स, टेल मी. हाँ, सनलाइट. सनलाइट विल बी द एसेंशियल, राइट, रिसोर्स. तो क्या ये सनलाइट इंफिनिटी अमाउंट पे प्रेजेंट है या ये लिमिटेड रिसोर्स है? खुद सोच के बताइए, खुद सोच के बताइए. अगर आप, कोई मिल गया कि जादू है, तो आपके लिए एसेंशियल रिसोर्स क्या है? एसेंशियल रिसोर्स सनलाइट. तो टेल मी, अर्थ के पास जो चीजें हैं, लैंड, लेबर, एनीथिंग, गुड, सर्विसेज, जो भी है, दिस इज स्केयर्स इन रिसोर्स. क्या बट सनलाइट स्केयर है कि इनफाइनाइट है? टेल मी. तो आई गेस यस, यू ऑल आर राइट, इनफाइनाइट रिसोर्स है ये. सो विल देयर इज अ नीड ऑफ एनी इकोनॉमिक्स ओवर हियर? तो नो इकोनॉमिक्स इज रीडेड, बिकॉज यहां स्केयर्स चीज है ही नहीं. तो जहां पर कोई स्कैरसिटी नहीं होगी, नॉट स्कैरसिटी, वहां पर ऐसे डिसिप्लिन्स होंगी नहीं. और एग्जांपल आप बताइए जिस पे स्कैरसिटी नहीं है. एयर. यस, एयर इज ऑल्सो इनफाइनाइट रिसोर्स. सर, तो आप बोलोगे सर अर्थ के अंदर ही तो एयर है. यस, अर्थ के अंदर एयर है, लेकिन पूरे गैलेक्सी में एयर है. फ्रेश एयर लिमिटेड है. तो फ्रेश एयर इज स्केयर इन नेचर या लिमिटेड इन नेचर. बट अगर मैं बस एयर बोलूं, इज इट क्लियर? सो इट इज इनफाइनाइट रिसोर्स. सो जहां पर स्कैरसिटी किसी चीज की नहीं है, वहां पर कोई डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कराओगे कैसे? सो आई होप दिस टॉपिक वॉज द लास्ट इन यस्टरडे क्लास. सो यहां से ही मैंने स्टार्ट किया, तो आई होप यहां तक क्लियर है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, in the next part, wait, we will see, we will see classification, classification, classification of
क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी आपने पढ़ा है। तो आई विल टेल यू द क्लासिफिकेशन ब्रॉडली। यू नो, मैंने बता भी रखा है कि दो पार्ट में है, माइक्रो और मैक्रो, बट आई विल टेल यू इन सम important way also. Wait a minute. I will tell you in some important way also. This is classification on the basis of macro versus micro, and there is two more classification which usually no one will tell you, but I am telling you, of economic subject, that is discipline, that is positive versus normative. So I hope in the second lecture I cleared your point that what is macroeconomics. Tell me, this is a broad perspective na, collection of individuals, sum of individual thoughts and मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट या चीजें वो कर रहे हैं, कलेक्शन है, तो इट इज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव. Is it clear? Like telescope, broad, and even now micro, you can tell me individual perspective, like 10,000 AC order और ये सिंगल AC के लिए करने वाला, this is individual perspective, micro. I in the second class, it is at microscopic level. It is microscope. So I cleared your doubt in the second class, right? So I hope this difference is very clear to you. What is macro and what is micro? Now we will talk about this, the second classification, that is positive versus normative. What classification is this? So see, then I will write positive economics. What is it? See, positive economics is a fact-based statement. Fact-based statement. If something is fact-based statement, it can be verified also. It can be verified also, right? या अगर मैंने कोई स्टेटमेंट पास किया तो आप उसको वेरीफाइड करके राइट और रॉन्ग प्रूव कर सकते हो. राइट और रॉन्ग प्रूव कर सकते हो. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर यूजुअली फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट, जिसको आप वेरीफाई करके आप उसको स्टेटमेंट को सही या गलत बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से क्लियरली ये चीज समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, राइट, इन्फ्लेशन in India, suppose, is 7%. So what do you think? This statement will be verified ना, because it is a fact-based statement. Fact क्या है कि inflation in which country? India is 7%. You will first verify, और अगर होगा तो you will say, yeah, this statement is right or wrong. Is it clear? So it can describe or explain the authenticity, whether the inflation in India is low or is 7% or not. So I hope positive economics is clear, right? What we can write in positive economics? Positive economics, it is economics in which we describe, yeah, explain or predict what? Economic events. Basically, it is statement of fact, yeah, verifiable, whether it is right or wrong. I hope it is clear. So now we come to the second part
of classification in this is normative. Normative economics. What do you think it is? It is opinion based. Opinion based, right? It can't be verified because it is opinion based. For example से आपको चीजें क्लियर होंगी, right? जैसे inflation in India is too high and should be lower. So you can't say कि this is verified. अगर मैंने बोल दिया, अगर मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं या कोई भी इंसान हूं, तो मैंने ये ओपिनियन दिया ना अपना. Any in normative economics, anyone can give the opinion, but in positive economics, fact based statements are used. अगर मेरे हिसाब से 0.1%, 0.1 इन्फ्लेशन भी हाई है, तो ये मेरे हिसाब से सही है. आप इसको गलत नहीं बोल सकते. यू कांट वेरीफाई इट. ये मैंने अपना ओपिनियन दिया. मेरे हिसाब से अगर 2% इन्फ्लेशन भी हाई है, तो ये मेरे हिसाब से, ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बोल सकता हूं. इट इज नॉट based on the fact. It is my opinion. So opinion can be anything. Is it clear? For me, 0.1% is a very high inflation. For another person, it can be 2%. For RBI, it should be 6 to 7%. Right? So it doesn't matter. It is मतलब इसमें आप fact नहीं देखते, इसमें आप चीजों को verify नहीं कर सकते because it is based on opinion based. Is it clear? Is it clear? Now we can write in normative, it is good, bad, what ought to be. You can't say ki what is exactly, because it is an opinion based, right? You can't verify it. It is statement of opinion, not statement of facts. ओपिनियन कैन वेरी ना, मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो वेरी कर सकता है, राइट? तो फॉर दिस इट इज नथिंग राइट और रॉन्ग. लाइक फॉर पॉजिटिव इट कैन बी राइट और रॉन्ग बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड फैक्ट, राइट? तो फैक्ट कैन बी प्रूवन राइट और रॉन्ग, बट ओपिनियन कांट. ओपिनियन डिफर्स. इज इट क्लियर? सो इट इज नॉन वेरिफेबल. I hope till here it is clear. Now I will give you some example and you will tell me whether it is positive economics or normative economics, right? First, unemployment rate in India is 5%. First statement. Second, wait. Free health care will increase government expenditure by 6%. The third one, government of India should focus on unemployment. And fourth, healthcare should be free. So tell me which statement is right or wrong? Which statement is positive or normative? First statement, tell me. Open your mic and tell me. Viewers, tell me. Unemployment rate in India, it is a positive economy, is 5% or normative?
Tell me, it is a positive or normative? Positive. Positive, because it is based on the fact. Very good. Fact that, yeah, 5%. So it is positive because it can verify ना, we can verify it कि we can check ना कि क्या इंडिया में 5% अनएम्प्लॉयमेंट है. तो इट कैन बी प्रूवन, जो वेरीफाई हो सकता है वही सही और गलत हो सकता है ना, राइट और रॉन्ग. दिस वन, राइट और रॉन्ग. तो यस, दिस इज पॉजिटिव. टेल मी द सेकंड कंडीशन. Second question. Free healthcare will increase government expenditure by 6%. It is positive or normative? Can it be verified? Can it be verified? It is fact based. Tell me. The second. Think and say. Free healthcare will increase government expenditure by 6%. It has given the fact 6%. So it is also positive. Is it clear? It can be also verified and checked ki whether fact based, whether it is actually it is 6% or not. But tell me about this, the third one. Third one. Government of India should focus on unemployment. It is opinion or it is fact? It is a opinion of some maybe MLA, MP, anyone या नॉर्मल पर्सन. इट इज एन ओपिनियन. व्हाट यू थिंक? अगर ये स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो तो ये स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन लग रहा है या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लग रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. जहां भी ये वर्ड आ जाए ना, शुड, आई एम टेलिंग यू, ओपिनियन चेक करने के लिए शुड, वुड, तो ये ओपिनियन बेस्ड हो जाता है. तो दिस इज नॉर्मेटिव बिकॉज इट इज ओपिनियन बेस्ड, राइट? तो नॉट वेरीफाइड, यू कांट वेरीफाइड ना. I hope it is clear. And see the next one. Healthcare should be, again, I told you, jahan should would ho, this will be a normative based because the opinion, statement of opinion aa gaya isme. Normative economics. So it is also opinion based, non verified. Is it clear? Is it clear? बस टेल मी, आर यू नॉट, अगर आप अब ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो एक साथ. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 5%. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट. आर नॉट दिस, आर नॉट दिस बोथ इज लिंकिंग? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, right? One is positive economic and other is normative. Are not both is linking, right? Unemployment rate in India is 5%. So government of India should focus on unemployment. Second one, read the second one. Free healthcare will increase government expenditure by 6%. So healthcare should be free. Are not this two statements interlinking? So what I am telling, who has done this? Who has verified the positive data and the opinion normative या opinion based data? Who did this job? Positive data या fact based? Who is interlinking it? ठीक है? You can observe a pattern. You can observe a pattern in these two. Observe a pattern. Observe a pattern. Is it clear? You can observe a pattern in these two. So who is doing this? It is done by an economist, right? So on proven some fact, they just best utilize of resource.
Are you getting this point? So this is the difference of positive economics and normative economics. Is it clear? So this is based on the classification of economics, right? So this too I told in the second class only. This is some more classification that I want all of you to know. Is it clear? So I hope if someone will ask you what is the job of economist, and you will say it it change the fact proven data to opinion proven data, find a link on them. Who does this? And यही तो हुआ best utilize of resource. Who does this? Economist. Is it clear? तो कोई पॉजिटिव डेटा को नॉर्मेटिव डेटा में अगर कोई लिंक कर सकता है, who will do this best utilization of the data? Economist. I hope it is clear till here. Okay, so I hope this classification economics is clear till now. So I'm moving forward. So now we will discuss what I call actors in microeconomics and rational means logical thinking, right? Rational economic thinking. So put down the heading, write this. If you all can want I can provide the PDF of this class also, but you need to join my Telegram channel, right? So see, for the PDF, I will tell you what are the actors in microeconomics first. See, economics, the subject, usually इसके दो बच्चे हैं. It has two children, right? Economic has two children. ठीक है? पहला, first is the consumer. Consumer, the word, जो हम सभी तो कंज्यूमर हैं, राइट? हम सभी तो एक कंज्यूमर है, किसी ना किसी चीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, किसी ना किसी बिजनेस के चीजों को तो कंज्यूम ही तो कर रहे हैं, वेदर इट्स अ फोन, टेलीविजन, समझ रहे हो आप? तो हम डे टू डे लाइफ में एवरीवन इज अ कंज्यूमर. तो कंज्यूमर वो होता है जो डिमांड करेगा. इज इट क्लियर? जो कंज्यूम कर रहा है वही डिमांड करेगा ना, कि भाई मुझे ये एलजी नहीं ओनिडा की टीवी चाहिए, मुझे अब हिताची की एसी नहीं वर्लपूल की एसी चाहिए, मुझे अब यहाँ नहीं, इसकी सर्विस अच्छी नहीं लग रही है केटरिंग की, मुझे बल्ले भाई की सर्विस अच्छी लग रही है. तो कंज्यूमर जो होता है, जो कंज्यूम कर रहा है, जो सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, वही तो डिमांड करेगा. तो इन इकोनॉमिक्स कंज्यूमर वो होते हैं जो डिमांड करते हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सेकंड, दो चिल्ड्रन मैंने बताया, ये तो पहला बच्चे हुए इकोनॉमिक की. दूसरा कौन है? प्रोड्यूसर. सो हु इज प्रोड्यूसर? सिंपल, जो सप्लाई करेंगे. लाइक अगर यार, टेल मी ऑनेस्टली, मैं कंज्यूमर हूं या प्रोड्यूसर हूं? मैं आप लोग के लिए कंज्यूमर हूं कि प्रोड्यूसर हूं? टेल मी, थिंक एंड टेल. थिंक एंड टेल मी, मैं आप लोग के लिए कंज्यूमर हूं कि प्रोड्यूसर हूं? फॉर द व्यूअर्स, आई एम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. मैं सप्लाई कर रहा हूं या डिमांड कर रहा हूं? बताइए. मैं अपनी नॉलेज, टेल मी. सप्लाई कर रहे हैं. तो एम आई कंज्यूमर और प्रोड्यूसर? टेल मी. हाँ, सो टेल मी वेदर आई एम अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर फॉर यू, मतलब व्यूवर्स जो देख रहे हैं मुझे. प्रोड्यूसर. बट क्या मैं कंज्यूमर नहीं हूं? क्या मैं जिस आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं टीचमेंट, क्या मैं उसकी सर्विस को, उसकी सप्लाई को कंज्यूम नहीं कर रहा? आई कैन बी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एट अ बोथ टाइम. ठीक है? तो क्वेश्चन हियर अराइजेस, am I
am I not the consumer and producer? Tell me. So we are both most of the times, most of the time हम दोनों हैं। आप आप समझो, आप अगर किसी कंपनी पे आप वर्क कर रहे हो, वट एवर कंपनी यू आर वर्किंग, आप उसमें कंज्यूमर हो कि प्रोड्यूसर? आप उसकी सर्विस को तो कंज्यूम कर रहे हो, राइट? वो आपको जो सैलरी दे रहा है, एवरीथिंग व्हाट ही इज टेकिंग इन डिमांड। और फिर आपसे आपकी फैमिली क्या है? आप अपने फैमिली के लिए क्या हो? आप उनको सप्लाई दे रहे हो ना फिर अपनी सैलरी से। तो यू आर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एट अ बोथ। So anyone can be a consumer producer depending upon the point of view. But एक टाइम पे we will be either consumer or producer. But at a time जब आप अपनी कंपनी को, आप अपनी कंपनी की जो सेट आपको लैपटॉप वगैरह दी हुई, अगर आप एक आईटी हब में हो तो उसकी सप्लाई को आप कंज्यूम कर रहे हो ना, तो एक टाइम पे आप एक ही चीज करोगे। फिर जब आपकी सैलरी आई, आप अपने फादर मदर को दे रहे हो, तब आप एक प्रोड्यूसर हो गए, राइट? बट एट अ टाइम आप एक ही चीज रहोगे, या तो आप कंज्यूमर रहोगे या तो आप प्रोड्यूसर रहोगे। तो बट एट अ टाइम, एट अ नॉट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम, एट अ सिंगल टाइम वी एक्ट एज अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इज इट क्लियर? समझ आ गया कि व्हाट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर? सो दिस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर द टू चिल्ड्रंस इन इकोनॉमी। समझ में आया? तो व्हाट वी विल डू, बिकॉज सिंगल टाइम पे एक ही चीज ऐसा आप ऐड कर सकते हो, तो वी विल स्टडी एट अ टाइम। मतलब स्टडी एट अ सिंगल टाइम, एक बार कंज्यूमर पढ़ेंगे, ऐसे एक बार ये पढ़ेंगे, दोनों एक साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही चीज होते हैं, जो कंज्यूम कर रहा है वो प्रोड्यूस भी करता है, राइट? बट एट अ टाइम पे हम बात करेंगे, स्टडी एट अ सिंगल टाइम। तो जब सिंगल टाइम पे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम सिंगल टाइम पे बात करेंगे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर में। एंड कंज्यूमर वो होता है जो डिमांड करता है, और ऑब्वियसली नाम से ये, जो प्रोड्यूसर वो होता है जो सप्लाई करता है। इज इट क्लियर? इकोनॉमिक्स। अब वी विल सी व्हाट वी कॉल दिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई टोल्ड यू we will study this at a single time, at a wait at a single time, right? So in microeconomics consumers are known as consumers are known as consumers are known as households, households, या we know जो आपका क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। तो कौन? हाउस होल्ड्स। वी माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स में एट अ सिंगल टाइम वी कॉल देम एज हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स। इज इट क्लियर? एंड प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस कौन करेगा इन माइक्रोस्कोप इकोनॉमिक्स टर्म? इन इकोनॉमी टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, माइक्रो इकोनॉमी टर्म। इट इज बिजनेस या फर्म, बिजनेसेस या फर्म्स वही तो सप्लाई करते हैं। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म हाउस होल्ड और इंडिविजुअल को वी विल टेल एज कंज्यूमर, एंड प्रोड्यूसर जो आपका सप्लाई कर रहा है, दिस इज बिजनेस। यस, जो बिजनेस होता है वही सप्लाई, एंड फर्म्स। इज इट क्लियर? सो वन क्वेश्चन, नाउ गिव मी द आंसर। एज अ कंज्यूमर व्हाट, अब ये इकोनॉमिक्स के टर्म में सोचना। इन जनरल टर्म मैंने बता दिया, कंज्यूमर वो होता है जो डिमांड करता है,
प्रोड्यूसर वो होता है सप्लाई। मेजॉरिटी टाइम हम दोनों मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बोथ हम लोग बोथ ही होते हैं, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, बट सिंगल टाइम में वी विल आइदर बी अ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ये समझ में आ गया? जनरल टर्म मैंने बात की। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में व्हाट वी नोन एज, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बोलेंगे? अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम हाउस होल्ड या इंडिविजुअल, क्योंकि ये आपका डिमांड ले रहा है, डिमांड कर रहा है। बिकॉज तो डिमांड कौन करेगा इकोनॉमिक्स में? जो इंडिविजुअलिटी है वही करेगी ना, आप ही ना डिमांड करोगे, आपके ही बारे में तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेवल इज ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हाउस होल्ड में जो रह रहे हैं वही तो होंगे, इज इट क्लियर? जो डिमांड कर रहे हैं। एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर जो बिजनेस फर्म जो सप्लाई करेंगे, यही तो सप्लाई करेंगे ना। जैसे एसी के एग्जांपल में मैंने दिया, तो आप जिस भी शॉप में गए, हिताची के, वर्लपूल के, दैट इज द प्रोड्यूसर, दैट इज द बिजनेस फर्म्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म। सो माय क्वेश्चन इज, एज अ कंज्यूमर, व्हाट is your main objective as a consumer? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में आप सोच के बताइए, नॉट जनरल टर्म है। आप एक इंडिविजुअल हैं, कंज्यूमर मतलब यू आर अ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड। तो एक इंडिविजुअल टर्म में कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर वो एक शॉप पे गया इकोनॉमिक टर्म में, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? टेल मी, बताइए, टेल मी। एज अ कंज्यूमर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जस्ट रिमाइंड, जस्ट सेकंड क्लास को रिमाइंड कीजिए, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में आपका क्या बताया था, किस मेथड पे आपने एनालाइज किया था सारी चीजों को, एसी के चीजों को, बताइए। एज अ कंज्यूमर आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगी? बताइए व्यूवर्स, आई एम गिविंग 1 मिनट, थिंक एंड टेल। एज अ कंज्यूमर आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगी? आप अगर किसी से डिमांड की हो, उसका सप्लाई लेने गए हो, तो एज अ कंज्यूमर आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगी? राइट, ओके। ऑफ एनीथिंग यू बाय, ऑफ एनीथिंग you buy, what you will think, मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? बेस्ट क्वालिटी, राइट, यही तो होगा, बेस्ट क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट। इसी पे देख के तो हम इतनी एनालिसिस किए थे। एज अ कंज्यूमर आपकी यही तो होगी, राइट? सो एज अ कंज्यूमर व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव? योर मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट बेस्ट क्वालिटी आपको चाहिए एट लोअर कॉस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ प्रोड्यूसर, what is your main objective? As a producer, what is your main objective? कोई भी प्रोड्यूसर हो, लाइक यू आर द मैकडोनाल्ड सीईओ, मैकडी के आप सीईओ हो, या आप केएफसी के सीईओ हो, व्हाट विल बी योर मेन ऑब्जेक्टिव एज अ प्रोड्यूसर? आप सप्लाई दे रहे हो जनता को, राइट? चीप क्वालिटी, नो नो नो, चीप क्वालिटी तो कैसे हो सकता है? व्यूवर्स थिंक, आपका सबसे एज एन प्रोड्यूसर अगर आप सप्लाई दे रहे हो, आप एक बिजनेस खोल के रखे हो, प्रोड्यूसर मतलब क्या बताया मैंने इकोनॉमिक्स टर्म में? आपने कुछ बिजनेस ओपन करके रखा है या आपका फर्म है, आप उसी से सप्लाई दोगे, राइट, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म। सो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा अगर आपने बिजनेस खोल के रखा है? योर मेन ऑब्जेक्टिव विल बी दैट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर? सो फॉर अ कंज्यूमर उसकी मेन ऑब्जेक्टिव होती है कि बेस्ट क्वालिटी एट लोअर कॉस्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन, एंड फॉर अ प्रोड्यूसर टू अर्न मैक्सिमम इज मैक्सिमम प्रॉफिट, इट्स हिज ऑब्जेक्टिव। सो अगर सी, तो व्हाट वी विल कॉल दिस दिस कंज्यूमर, ये जो कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी प्लस लोएस्ट कॉस्ट, अगर कोई उसने डिमांड किया और उसे वो चीज की सप्लाई मिल गई, राइट, व्हाट वी, मतलब मान लो आपने डिमांड किया मैकडी से कि ये बर्गर
मुझे 300 की जगह 200 में दे दो, और आपको उसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मैकडी की बर्गर की, और लोअर कॉस्ट भी हो गया जो आपने डिमांड किया उस पे, तो एज अ कंज्यूमर व्हाट विल बी योर रिजल्ट? अगर आपको ऐसा मिल गया, आप सेटिस्फाइड हो गए ये दो क्वालिटी से, यू विल बी सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एंड यू विल बी हैप्पीनेस। इज इट क्लियर? सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। इसी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस जो आपको मिल रही है एज अ कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर आपकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी? बेस्ट क्वालिटी प्लस लोअर कॉस्ट में कोई सामान मिल जाए, क्वालिटी भी अच्छी रहे और कम दाम में भी मिल जाए। तो आपको क्या हुआ? एक फीलिंग्स आई, इमोशन आई, इमोशन आई, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। इसी सेटिस्फैक्शन इमोशन, जो इमोशंस हैं, इमोशंस हैं, इसको इकोनॉमिक टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में we called it as, economic term में we called it as utility. This is what utility means. As a consumer, अगर आपको मैक्सिमम मतलब लोअर कॉस्ट हो जाए और कोई चीज की बेस्ट क्वालिटी मिल जाए, तो आपकी इमोशन क्या होगी? सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। और यही इमोशन को इकोनॉमिक टर्म में, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में वी कॉल इट एज यूटिलिटी। माइंड इट वर्ड, आपने बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा, यूटिलिटी, राइट? राइट? और एज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर अगर आपको, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, राइट, तो आपकी भी इमोशन क्या होगी? आपकी भी इमोशन क्या होगी? सेटिस्फैक्शन आपको भी बहुत ज्यादा होगा, और हैप्पीनेस भी होगा कि यार मेरी बिजनेस अच्छी चल रही है, हैप्पीनेस, राइट? सो वी कॉल इट एज, in economic term, this emotion in economic subject, economic term we call it as revenue. Is it clear? Is it clear? I hope these two statements are being cleared कि microeconomics purpose से what we call consumer and what we call producer, मतलब क्या उसका मेन इंटेंशन होता है, ऑब्जेक्टिव। तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर को व्हाट वी कॉल्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड, हाउस होल्ड या आपको इंडिविजुअल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या मैंने अभी जस्ट बताया, मैंने अभी जस्ट बताया, बताया ना, लोअर कॉस्ट प्लस बेस्ट क्वालिटी। इज इट क्लियर? अगर तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, तो मतलब लोअर कॉस्ट एट बेस्ट क्वालिटी, तो मतलब इसकी, इसको क्या बोला मैंने इकोनॉमिक टर्म में, क्या बोलना है इस चीज को? मैक्सिमम यूटिलिटी। मैक्सिमम यूटिलिटी अगर किसी कस्टमर को हो रही है, यूटिलिटी, राइट, तो वो एज एन कंज्यूमर पॉइंट से बहुत हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। तो वी कॉल दिस एज, इकोनॉमिक टर्म में वी कॉल दिस एज इट यूटिलिटी। व्हाट वी कॉल प्रोड्यूसर, जिसे हम बिजनेस या फर्म्स, इसकी क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इकोनॉमिक टर्म में हम इसे क्या बोले? इकोनॉमिक टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में व्हाट इट विल जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू। तो रेवेन्यू वर्ड किसके लिए है? प्रोड्यूसर के लिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट? और यूटिलिटी वर्ड किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए, जिसको लोअर कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी पे चीजें चाहिए, राइट? सो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल बाय both of you, all of you viewers. So I hope that this two consumer, two चिल्ड्रंस ऑफ इकोनॉमी, दैट इज कंज्यूमर एंड इकोनॉमी के पॉइंट से भी मैंने बता दिया जो जनरल टर्म यूज करते हैं, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हाउ वी विल डील दिस, एंड what is the meaning of utility and what is the meaning of revenue. You have just known this. So now we will tell one question. Then what is, if consumer and producer are the two children of economy, then what is the government?
what is the government in terms of economy? Can viewers tell me this? Viewers, can you tell me this? What is the government in terms of economy? Yes, yes, yes. All of you are right. Government, government is the parent or regulator. Yes, regulator of the economy. They are the parent or the regulator of the economy. मतलब what they will do? गवर्नमेंट क्या करेगा? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर कौन? इकोनॉमिक्स के टर्म में इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स, हम हमारे जैसे लोग, और जो बिजनेस कर रहे हैं, जो फर्म्स खोले हुए हैं, दैट इज अ प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट क्या करता है? इनको रेगुलेट ही तो करता है। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की, जिनकी जो बाल बच्चे, उनके तो माँ बाप ही हुए ना, पेरेंट हुए। व्हाट? गवर्नमेंट इकोनॉमी के पेरेंट हुए। तो इनका काम क्या है? पेरेंट्स का काम क्या होता है? अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट चीज देना। तो व्हाट गवर्नमेंट डज टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर? दे गिव्स बेस्ट आउटकम्स to their two children, consumer and producer. So that is the keyword, right? So I put the heading as also what is rational thinking, and but I have to and matlab addition to that. And means with it comes with that only. And means, so what is rational economy thinking then? This is what जो मैंने पढ़ाया वही है rational economy thinking. Economy thinking. Is it clear? Rational economy thinking. What is it? It is microeconomics, consumer and producers, right? कंज्यूमर रैशनल मेन ऑब्जेक्टिव, रैशनल मीन्स ऑब्जेक्टिव। क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या? आई टोल्ड यू। अब आपको इकोनॉमिक टर्म पे बात करना है। मैक्सिमम यूटिलिटी एट लोअर कॉस्ट। व्हाट इज प्रोड्यूसर? रैशनल बिहेवियर, लॉजिकली, और मेन ऑब्जेक्टिव इट इज मैक्सिमम प्रॉफिट्स या रेवेन्यू। So these are two children of economy. I hope अब आपसे कोई and who is the parent of economy? Government is the parent of economy. Government is the parent of economy who regulates them, because parents का काम ही होता है best outcomes to their two children. So I hope till here it is very clear. I have taught you the differences between the classification of economics and some basic, what are the two children of economics in microeconomics, what we call consumer producer, and what is utility, how utility word is used in economics, how revenue word is used in economics, in what point of context it is using, right? So I hope I am very clear to everyone. So this is the lecture 4 in the economics. The series will continue, and you will have a great understanding in this economic lecture. That's my promise. Thank you so much. Keep learning. Take care. Bye.